नुजाफैनो हानाय गासैबो आलासि आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो दिनैनि मेलाव बरायनाय जाबाय। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ऊर्जावान और निर्णायक गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, असम के सबसे गतिशील और कर्मयोगी मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, आज के इस मंच पे उपस्थित असम के स्पीकर माननीय विश्वजीत दैमारी जी, मंत्री यूजी ब्रह्मा जी, मंत्री अतुल बोरा जी, मंत्री अशोक सिंघाल जी, संसद और असम के भाजपा के अध्यक्ष दिलीप सैकिया जी, संसद रंगरा नार्जारी जी, संसद जयंत बसुमतारी जी, कार्बी आंगलंग ऑटोनोमस काउंसिल के चीफ तुलीराम रोंहांग जी, BKWSC की प्रमुख मिहिनेश्वर बसुमतारी जी, और आज इस मंच पर उपस्थित भारत की होम सेक्रेटरी गोविंद जी, DIB की डायरेक्टर तपन डेका जी, और उपस्थित बोडोलैंड के अलग अलग क्षेत्र से आए हुए मेरे भाइयों बहनों दादाओं, मैं सबको आज के इस सभा में मैं सबको स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए फिर से एक ऐतिहासिक दिन है। बोडो समझौते के बाद पहले बार 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं हमारे ऊर्जावान गृह मंत्री अमित शाह जी को स्वागत करने के लिए। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने यहाँ एकजुट होके फिर से आपने आज दिखाए कि बोडोलैंड की जो जनता है ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ है, और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के साथ है। आज बोडोलैंड में ये अखिल बोडो छात्र संस्था की जो 57 एनुअल कॉन्फ्रेंस है, इसमें 3 दिन से काफ़ी चर्चा हुए हैं, और आज खास करके ये अखिल बोडो छात्र संस्था की जो 58 साल के इस समय पे अखिल बोडो छात्र संस्था ने बोडो समाज के लिए, बिछड़े हुए जनजाति के लिए बहुत सारे काम किए हैं। शिक्षा की उन्नति के लिए, यहाँ की सामाजिक स्थिरता के लिए, और बोडोफा ने जैसे बोला है कि जियो और जीने दो, यही एक सिद्धांत को लेके ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन ने हर समुदाय के साथ भाईचारा से, आत्मसम्मान से जीने का एक माहौल यहाँ बनाई है। मैं अखिल बोडो छात्र संस्था की प्रेसिडेंट दीपेन बोरो जी और पूरा टीम को धन्यवाद देते हैं। इन्होंने बोडोलैंड क्षेत्रों में शांति लाने में, जैसे कि प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, गृह मंत्री जी का नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी का जो यहाँ पे दिन रात मेहनत, उसके साथ अखिल बोडो छात्र संस्था और NDP के हमारे भाइयों दादाओं ने जो हथियार लेके बैठे थे, आप लोग एकजुट होके बोडोलैंड में शांति लाने में कामयाब हुआ। सर, हम लोग जानते हैं केवल सच्चा नेतृत्व से ही देश बनते हैं, समाज बनते हैं। एक समय था कि हम लोग को दिल्ली और दिसपुर का दरवाज़ा खटखटाना पड़ते थे, लेकिन दरवाज़ा खुलते नहीं थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश संभाला, जब अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री बने, तब से बोडोलैंड क्षेत्र ही नहीं, पूरा भारत की और पूर्वोत्तर के लोगों का जो सदियों से चले हुए जो समस्या था, इसका धीरे धीरे एक से एक के बाद एक हल निकला है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री जी ने 3 बार बोडोलैंड के दौरा कर चुका है ये 4 साल में। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और उन्होंने बोडोलैंड के लोगों के दिल जीत चुके हैं, और बोडोलैंड के लोगों के लिए काफ़ी समय भी दिया है, प्यार भी दिया है। आज हम प्रधानमंत्री जी को आभारी है कि बोडोलैंड के लोगों ने शांति से जीने का ये अवसर मिला, केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए। अब हमारे देश में सबसे शक्तिशाली और निर्णायक गृह मंत्री है, जो 150 करोड़ भारतीयों और विशेष रूप से बोडोलैंड के लोगों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी कदर करते हैं। सर, आप बोडोलैंड के लोग बिना किसी डर से जी रहे हैं। हम आपके नेतृत्व में बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। हम आपको 35 लाख लोग जो बोडोलैंड में रहते हैं, इनके तरफ से मैं पूरी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि ये लास्ट 4 डिकेट्स जो था, 4 जो डिकेट्स था, इसमें जो शांति बोडोलैंड में नहीं थे, ये शांति हम लोग को वापस मिले है केवल आपके नेतृत्व में। तीसरी बोडो एकॉर्ड जो है,
ये आपके नेतृत्व में और हमारे गतिशील चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में इसका इम्प्लीमेंटेशन द्रुत गति से ये हो रहा है। हम आपको ये बोल के खुशी है कि जो ये 3 साल में हमारे जो भाइयों हथियार लेके लड़ाई किए थे, जो लोग मूल धारा में आए हैं, इनमें से करीब 5000 लोगों को रिहेबिलिटेशन दे चुके हैं। जो मर गए थे, जिसको हम लोग मार्टियर मानते हैं, 632 लोगों को मार्टियर को अभी तक मुआवजा दे चुके हैं। जो भाई मूल धारा में आया है, उनका स्किल ट्रेनिंग से लेकर जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, जहां आप मंत्रित्व करते हैं, ये सहकारी जो डिपार्टमेंट में, इनसे भी इनको बहुत ट्रेनिंग और सपोर्ट मिला है। आज की इस समय में सर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। हमारे जो 6 शेड्यूल काउंसिल है, आप आने के बाद काफ़ी इसका जो स्ट्रेन ये काफ़ी बढ़ रहा है, इनका प्रॉब्लम काफ़ी हल निकल चुका है। और अभी के समय में ये काउंसिल में रहने वाले लोगों के विकास के लिए, खास करके आसाम में हमारा मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी कुछ किए हैं। यहाँ एजुकेशन, यहाँ सड़क बनाना, हर एक समस्या के हल के लिए काम किए हैं। सर अभी हम लोग का सब नॉर्थ ईस्ट से हो या बोडोलैंड से हो, एक ही विनती है आपसे, जो हमारे भारत के संविधान की 125वां संशोधन के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ये होने से काउंसिल के जो गवर्नमेंट है और काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी से लोगों के सेवा कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये बात दोहराना चाहता हूँ कि अभी एक नेता है जो इसको हल निकाल सकता है, और पूर्वोत्तर के जो 10 शेड्यूल काउंसिल के, इसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सर मैं आपको फिर से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि बोडोलैंड में शांति लाने के साथ साथ बोडो समुदाय हम लोग बिसरे हुए, अपने आप को बिसरे हुए समझते हैं, नेग्लेक्टेड समझते हैं, लेकिन इस जाति के, इस जनजाति के बहुत सारे आपने काम किए हैं। और हाल ही में नेशनल कैपिटल में एक सड़क बोडोलैंड बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म जी के नाम पे आपने डेडिकेटेड किया है। इसके लिए मैं सबको एक बार जोरदार तालियों के साथ सर को धन्यवाद देना चाहता है कि आपने बोडोफा के नाम पे दिल्ली में एक सड़क डेडिकेट किया है। दा मानगोनां रायजोफोर, आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै, दिनै जोङो मानगोनां नखर मन्त्रि बिथांखौ खोनासंनो फैदों। बडोलैंड एकर्ड, 3rd बडोलैंड एकर्ड जानायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव गोबांबार जोंनि मानगोनां नखर मन्त्रि बिथाङा 5 टाइम्स फैबाय, खेबबा फैबाय। जोंनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा खेबथाम फैबाय, आरो जोंनि जेंनाफोरखौ बिथांमोना जोबोद मोजाङैनो मिथिगौ। दिनै बडोलैंड ओनसोलाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरा गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव थांनाय 58 बोसोर जि खामानिफोरखौ मावबोबाय, बिनि जेंनाफोरा लासै लासैनो सुस्रांजोबगासिनो दङ, हारिया जौगागासिनो दङ। बे समाव नोंथांमोनखौ बयखौबो फैबाय थानाय समाव माहारि बादजों आवगायलांनो, दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गसंनो आरो हावरिखौ खौसेयै लाखिनायाव बयबो आगान सुरफानो थाखाय खावलायनानै সকলোকে ধন্যবাদ জনালো। আপোনালোকে সকলো আহি আজিৰ সভা সফল কৰিলে। গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি সবে শুনিবলৈ আহিছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক শুনিবলৈ আহিছোঁ। পুনৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাই মোক বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। मेल बेखेवगिरि बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। মই সময়ত অসমৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক নিজৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। সকলোৰে খবৰ ভালনে? সকলোৰে ভাল? তেতিয়ালে মোৰ লগত একেলগে ক'ব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতৰ যশস্বী গৃহমন্ত্ৰী আৰু অসমবাসীৰ একেবাৰে আপোন, বড়োলেণ্ডবাসীৰ একেবাৰে আপোন ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, বিটিআৰৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া,
মন্ত্ৰী উৰ্খা গৌৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া, সভাত উপস্থিত বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়া, মিহিনেশ্বৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া, ৰাণগৌৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ সুৰত নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, কুসুম চৰগাৰী ডাঙৰীয়া, ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ সচিব গোবিন্দ মোহন ডাঙৰীয়া, ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোৰ ডিৰেক্টৰ শ্ৰী তপন ডেকা ডাঙৰীয়া, উপস্থিত ৰাইজ, আই মাতৃসকল, যুৱক যুৱতী, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, বন্ধু বান্ধৱীসকল, খুলুমবাই, নমস্কাৰ। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ 57তম বাৰ্ষিক অধিৱেশন উপলক্ষে মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি দীপেন বড়ো, উপসভাপতি খুৰমুদা ৱাৰী, সাধাৰণ সম্পাদক খনীন্দ্ৰ বসুমতাৰী প্ৰমুখ্যে সমূহ বিষয়ববীয়াক আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আজি আমি আপচুৰ এই 57তম অধিৱেশন দতমাত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। এই দতমাই হ'ল বডোফা আৰু বড়ো জাতিৰ মহান নায়ক বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জন্মস্থান। আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত মই বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতি অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি আমাৰ মাজত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শনত বড়ো ভূমিলৈ আমি স্থায়ী শান্তি উভতাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বড়ো জাতিৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰক আজি সমগ্ৰ দেশে স্বীকাৰ কৰি লৈছে। মই তেনে এজন গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক সকলোতে এটা ডাঙৰ হাত চাপৰিৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই বড়ো জাতিৰ উত্তৰণত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। 1967 চনৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰীত কোকৰাঝাৰৰ ট্ৰাইবেল ৰেষ্ট হাউচত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা গঠনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল। সেই দিনটোৰ পৰাই সমগ্ৰ জীৱনকালত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই অৰাজনৈতিক সংগঠন হিচাপে বড়ো জাতিৰ সৰ্বতো প্ৰকাৰৰ বিকাশৰ মূল নায়কৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। 1986 চনৰ 31 মেত দৰং জিলাত আপচুৰ অধিৱেশনত বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে। তেখেতৰ নেতৃত্বতে বড়ো সমাজে আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰৰ সপোন দেখিছিল আৰু সেই সপোনকে পম খেদি 2020 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা NDFB আৰু বড়ো জাতি আৰু সমগ্ৰ বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা NDFBৰ মাজত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছৰে পৰা আমি বড়ো জাতি আৰু বড়োলেণ্ডৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে নিৰন্তৰ কাম কৰিছোঁ। মই আজি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাৰ বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ সপোনক আজি আমি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কোকৰাঝাৰত আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ শান্তি চুক্তিৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আত্মপ্ৰকাশ কৰিলেও পূৰ্ণাংগ ৰূপ লোৱা নাছিল। আজি কোকৰাঝাৰত বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিও হৈছে আৰু অহা 15 এপ্ৰিলৰ আগতে আমি কোকৰাঝাৰ বিশ্ববিদ্যালয়কো
পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিবলৈ গৈ আছো, যিয়ে বড়ো সমাজলৈ এক নতুন বৌদ্ধিক গতি নমাই আনিব। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, ইয়াৰ লগতে আমি সংকল্প লৈছো যে আমি ওদালগুৰিতো বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা নতুন কেম্পাছ নিৰ্মাণ কৰিম আৰু অহা 3 বছৰৰ ভিতৰত ওদালগুৰিত এখন নতুন মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণৰ কামো আমি হাতত ল'ম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, ইয়াৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত গেলেফু আৰু কোকৰাঝাৰৰ মাজত যি নতুন ৰেল লাইনৰ প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে, এই নতুন ৰেল লাইনটোৱে সমগ্ৰ বড়োলেণ্ডৰ আৰ্থ সামাজিক পৰিৱেশৰো সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন কৰিব। আমি ইয়াৰ লগে লগে বড়ো অঞ্চলৰ বড়ো লোকসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত আলোচনা কৰি বড়ো মিডিয়ামক উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু ইয়াৰ পিছত গ্ৰেজুৱেশ্যনলৈকে শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাৰ কামত আগবাঢ়িছোঁ। কেইদিনমান আগতে অসম বিধানসভাত মই ঘোষণা কৰিছোঁ যে আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ 35খন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক আমি মডেল হাইস্কুললৈ ৰূপান্তৰ কৰিম, যাতে বড়োলেণ্ডত শিক্ষাৰ এক নতুন পৰিৱেশ নিৰ্মাণ হ'ব পাৰে। এই বছৰৰ অক্টোবৰ মাহত 8ৰ পৰা 10,000 যুৱক যুৱতীৰে লৈ আমি গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত বাগৰুম্বা আৰু বাৰদৈ চিখলাক আমি বিশ্বত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে সামূহিক প্ৰদৰ্শনৰো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। বড়োলেণ্ড অঞ্চলত 1200 মেগাৱাটৰ আৰু এটা নতুন শক্তি উৎপাদন কেন্দ্ৰ স্থাপনকে ধৰি আমি সমগ্ৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে নিৰন্তৰ কাম কৰি আহিছোঁ। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ অনুৰোধ ক্ৰমে আমি 31 মাৰ্চৰ দিনটো বডোফা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ উপজা দিনটো আমি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে দতমাত থকা বডোফাৰ সমাধিক আমি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সমাধিৰ স্বীকৃতি দি ইয়াক আমি সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তুলি প্ৰতি বছৰে 1 মে তাৰিখে বডোফাৰ মৃত্যু দিনটোক আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু বিটিআৰে একেলগে প্ৰত্যেক বছৰ আমি দতমাত পালন কৰিম, তেনে সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আমি বিচাৰোঁ যে বড়ো চুক্তি আখৰে আখৰে পালন হওক। আজি আমি বড়ো চুক্তিৰ পিছত 81খন গাঁও নতুনকৈ বিটিআৰত সমাহিত কৰিছোঁ। বড়ো ভাষা সংৰক্ষণৰ কাৰণে বড়ো ভাষাৰ সঞ্চালকালয় নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। বিটিচিৰ বাহিৰৰ বড়োসকলৰ বাবে বড়ো কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। আজি আমি শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ সকলো ঠাইতে থকা বড়ো লোকসকলক ভূমি স্বত্ব প্ৰদান কৰাৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ। আজি বড়ো চুক্তি অনুসৰি আৰ্থ সামাজিক প্ৰকল্পসমূহো আমি এটা এটাকৈ আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বাবে আমি প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। আজি বড়োলেণ্ড অঞ্চল শান্তিৰ এক নতুন দ্বীপলৈ পৰিণত হৈছে। বিগত 17 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত কৰি বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজে এক নতুন ইতিহাস নিৰ্মাণ কৰিলে। মই আজি পুনৰবাৰ বড়োলেণ্ডৰ সমূহ ৰাইজক 17 ফেব্ৰুৱাৰীত অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত কৰাত যি সহযোগিতা আগবঢ়ালে তাৰ বাবে মই পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মই আপোনালোকক অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ আশ্বাস দিছোঁ যে আমি একেখন অসমৰ তলতে বাস কৰি